Hello everyone, this is Suvendu, your physics mentor, and welcome to our part 3 of our chapter Scalars and Vector. And this is not our chapter actually, this is under basic mathematics, but you think it as a chapter or topic. And in this topic we will see so many new things, and this is completely new to us actually in our class 11. Okay, so up to our part number 2 we have already discussed what are the different types of vector. In part 1, what is vector, what is the difference between scalar quantity and vector quantity, what is the vector, what are the different way to write the vector and how to represent the vector. That part already we have covered in our part 1. And in part 2 basically we have discussed what are the different types of vectors, and this is our part 3, and we will discuss the extended format of the node point that is available on our part number 1. What is that point? Scalar quantities possesses only magnitude, but vector quantities have both magnitude and direction, and vector quantity नॉर्मल algebraic ऑपरेशन को satisfy नहीं करेगा. Why? क्योंकि इसके पास एक दूसरा चीज अवेलेबल है, that is our direction. Vector quantities are added under vector addition, not under normal algebraic operation. ये जो नोट पॉइंट हमें लिखी थी ना, ये नोट पॉइंट एक्चुअली एक्सटेंडेड पोर्शन और एक्सटेंडेड वर्जन को हमें आज इन डिटेल स्टडी करिबा. So our topic is addition of vectors. Our today's topic is addition of vectors. So we know as vector quantities possess both magnitude and direction, and as there is no rule in algebra to add directions, so vector quantities obey vector algebra. Now, why we will discuss vector algebra? It is already clear to us. Okay, why we will discuss vector algebra is already clear to us. Okay, wait 1 minute. I think it is clear. So next is under vector algebra, what you will see, what you will get. Remember, in vector algebra, two or more vectors combine to form a single vector, that is called resultant vector, and the vector which are added to form the resultant vector, that are called component vectors. So in our next point I am going to write in vector algebra, two or more vectors combine to form a single vector. Called resultant vector. That is called resultant vector, and the vectors which are added to form resultant vector are called component vectors. I think this part is clear to all of us. So in this topic, what is the meaning of a resultant vector and what to mean by component vector? That part already clear. Now see an example. Now we'll discuss in detail actually what is same order and opposite order. ये हमको पता चल चुका है actually.
Let us consider this is one vector and this is another vector, and these two vectors are in same order. Then as per triangle law of vector addition, third side of the triangle taken in opposite order gives their resultant vector. Now we will discuss in detail. Let it is a vector, this is your b vector, and this is r vector. So as per the triangle law of vector addition, so we can write r vector is equal to a vector plus b vector. We remember this r vector is our resultant vector as per our content, resultant vectors, and this a vector and b vector are called component vectors. These are called component vectors. I think this part is very clear to all of you. Now see, what are the different types of methods that is available for addition of vectors? Okay, so in next slide we will discuss in details. Methods to add vector. Methods to add vector quantities. Methods to add vector quantities. So first one is our triangle law of vector addition. First you see triangle law of vector addition. So in this case, what you will observe, in triangle law of vector addition, two vectors can be added. Only you can add two vectors. Two vectors can be added if they are in same order. If they are in same order. I think it is clear. Next come to our parallelogram law of vector addition. Here what can do? You can add two vectors simultaneously if they are in opposite order. So in next is our parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. So here we can add two vectors simultaneously if they are in opposite order. If they are in opposite order. Clear? So next is our which method? That is our polygon law of vector addition. And what we can do in that case? In case of polygon law of vector addition, we can add more than two vectors. But condition क्या है? If they are in same order. ये होना चाहिए. So in case of third method, that is polygon law of vector addition. So here we can add two vectors. Sorry, we can add more than two vectors. We can add more than two vectors simultaneously if they are in same order. If they are in same order, we can add more than two vectors simultaneously if they are in same order. And last one is our resolution method of vector addition. Resolution method of vector addition. Here any number of vectors can be added irrespective of their orders. When same order or opposite order we can add. Yes. So this is about our methods to add the vector quantities. Triangle law, parallelogram law, polygon law of vector addition. Another one is resolution method of vector addition. I think this portion is very clear to all of you. Next come to our
Triangle law of vector addition. Triangle law of vector addition. So remember one thing, when two or more vectors are added, sorry, when two vectors are in same order, not in same direction, when two vectors are in same order, then when they are added, they form a single vector. That single vector is called our resultant vector. And resultant vector के पास क्या available है? उसका magnitude as well as उसका direction. So in triangle of vector addition, we have to show how to find the magnitude and the direction of a resultant vector when two vectors of same order are added to form that resultant vector. That's our aim. Actually, now see, let us think this is your one vector. This is one vector. And this is suppose another vector. Let us think this is our another vector. Clear? So, how can we add them? How can we add them? That's the question mark. So what we have to do? Parallel shifting of a vector is possible. ये वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करके तो यहाँ तक ले आ रहा हूँ. रेडी? दिस इज द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर. नाउ ये वेक्टर को भी मैं पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे ले आ रहा हूँ. यस. नाउ देखो क्या हो रहा है. नाउ दिस टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर. अभी क्या दिखाई दे रहा है? दिस टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर. A vector, this one is B vector. Here this one is B vector, one is A vector. इसका मैग्नीट्यूड जो भी है इसका भी सेम टू सेम. ओके, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, उसको ऐसे कर दो बस. मैग्नीट्यूड बराबर. पैरेलल शिफ्ट करने के बाद नाउ दिस टू वेक्टर्स A vector and B vector are in same order. In that case, the third side of the triangle taken in opposite order gives their resultant vector. This is the meaning of our triangle law of vector addition. Your R vector is equal to A vector plus B vector. I think this part is clear to all of you. So in statement, what we have to write? For exam point of view, we have to write the statement of this triangle law of vector addition. Statement. If two vectors are represented by both in magnitude and direction. If two vectors are represented both in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in same order, by two sides of a triangle taken in same order, then third side of the triangle taken in opposite order, then third side of the triangle taken in opposite order. Opposite order means HH connection और TT connection. देखो TT यहाँ पे HH. Then third side of the triangle taken in opposite order gives their resultant vector. Okay, both in magnitude and direction. Both in magnitude and direction. Now our aim to find the magnitude of this resultant vector and the direction of this resultant vector. I think regarding our statement of triangle law of vector addition, it is very clear to all of you. If two vectors are represented by two sides of a triangle taken in same order, then the third side of the triangle taken in opposite order gives their resultant vector, both in magnitude and direction. जो component vector का भी magnitude direction available है, resultant vector का भी magnitude and direction available. Ready? Okay. Now find the expression for magnitude and direction.
expression for magnitude and डायरेक्शन। तो फिगर पे हमको क्या करना चाहिए, देखो कौन करेगा दरकार। दिस इज आवर ए वेक्टर, वी हैव टेकन इज ए वेक्टर एंड दिस इज आवर बी वेक्टर। ये था हमारा बी वेक्टर एंड ये क्या है हमारा, दिस वन इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर, वन इज रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, this is your r vector and this is a vector, this is b vector। Let's see, this is o point, this is b, this is q। What is the angle between a vector and b vector in the diagram? ये जो एंगल दिखाई दे रहा है, this is not the angle between a vector and b vector। a vector and b vector का एंगल जज करने के लिए let extend the op line till s। तो इसको यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट करने से क्या होगा, ओपी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने के बाद ये हो जाएगा ओ, दिस इज पी एंड यहाँ पे कनेक्ट होगा, टेल टेल कनेक्शन हो जाएगा बी वेक्टर एंड ए वेक्टर के साथ। तो ये एंगल होगा तुम्हारा थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड आर वेक्टर ए वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, देखो टीटी कनेक्शन अवेलेबल। लेट आर वेक्टर इज एट एन एंगल बीटा विथ रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर। ए वेक्टर से तुम लोग एंटी क्लॉकवाइजली बीटा एंगल मूव करने से किसको मीट करोगे, आर वेक्टर को मीट करोगे। क्लियर? नाउ इन दिस फिगर व्हाट वी हैव टू डू, extend OP till S and draw perpendicular QT upon OP extended format और upon OS। बस ये तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर QT अपन OS हो गया। yes, this is very clear to all of you। so in this diagram, by the help of this diagram we have to find the magnitude। okay, now को एक साइड में लेकर चलो। yes, so from the figure in triangle, first हमको क्या करना चाहिए, extend OP till S, extend OP vector till S, till S and draw perpendicular QT upon OS, upon OS। Is that clear? Good। Extend OP vector till S and draw QT upon OS। Ready? In figure OA vector क्या है, A vector। अब कौन अच्छी फिगर रे, PQ vector। PQ vector is our B vector and OQ vector is our R vector। Ready? so आमे पचारिबा OQ रो मैग्नीट्यूड केते R, देन OA रो मैग्नीट्यूड केते A, OP सॉरी मिस्टेक है, OP। this is OP vector। OP vector magnitude A, PQ vector magnitude B, like this। so in triangle पिक्चर को देखिए मत देखो, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल OTQ what we can write, OQ square is equal to OT square plus QT square। we can write OQ square is equal to OT square plus QT square। very good। and what is value of OT? OT is equal to OP plus PT, OP plus PT। so OP plus PT whole square plus QT square। perfect। so now find the respective value in figure। what is OQ? who can say what is OQ? OQ is equal to R magnitude। what is OP? OP is equal to A, pass।
Or what is PT and what is QT? This is not mentioned. So now you consider in right angle triangle, what PTQ, PTQ. What is sin theta? Sin theta means sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse. So QT by PQ. First, so QT is equal to QT by PQ का magnitude कितना B, which implies QT is equal to B sin theta. देखो कितना आसान हो गया, QT का वैल्यू मिल गया. सिमिलरली एंड cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? B by H. So PT by PQ, PT divided by B. Clear? So which implies PT is equal to B cos theta. And what is theta? Theta is the angle between A vector and B vector. Theta is the angle between A vector and B vector. Now put the respective value and do the calculation or proceed as per the normal calculation. So Q means R square is equal to OP का वैल्यू क्या है? A प्लस PT का वैल्यू क्या है? B cos theta square plus what is QT? B sin theta whole square. So after this we have to expand this term. तो एक्सपांड करना चाहिए हमको. देखो कैसे तुम लोग एक्सपांड करोगे. तो आर स्क्वायर का आंसर क्या होगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड ए प्लस बी cos थीटा का होल स्क्वायर कितना होगा? एक्सटेंड करो. एक्सपांड करने के बाद ए स्क्वायर प्लस फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 into फर्स्ट टर्म into सेकंड टर्म. So this will be a square plus b square cos square theta plus 2ab cos theta plus 2ab cos theta. के बाद b sin theta का होल स्क्वायर that is b square sin square theta. Now all of you see यहाँ पे b square cos square theta plus b square sin square theta. b square कॉमन ले आने से sin square theta plus cos square theta that will be 1. So here we will get r is equal to a square plus b square common ले आओ sin square theta plus square theta plus 2ab cos theta and this is your r square. तो r square का वैल्यू क्या हुआ? a square plus b square plus 2ab cos theta. And what is r? R means magnitude of resultant vector. That is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta whole root over. This is our required expression, the magnitude of resultant vector when the angle between two vectors are same. When the angle between two vectors is theta. Theta क्या है? Angle between two vectors. So in this way you have to proceed the analytical portion. कितना आसान हो गया देखो. So this is about the magnitude of resultant vector. So particularly we can write here. So in this way we can write. We came to know that thus r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta root over. But in actual practice what we have to write, r vector mod is equal to first vector magnitude square plus second vector magnitude square plus 2 into first vector magnitude second vector magnitude cos theta whole root over. This is the actual way to write magnitude of this resultant vector. What is theta? Theta is the angle between two vectors. And what is the direction of r vector? How can we find the direction of r vector? Now see this picture. We picture पे देखो. Let r vector is at an angle beta with respect to a vector. तो a vector के ऊपर खड़े हो जाओ. बीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करने से
we can meet the r vector. So in this right angle triangle देखो ये जो दिखाई दे रहा है तुमको ओ टी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल, तो tan बीटा क्या होगा ओ टी प्लस क्यू टी। क्लियर? तो उसी फिगर को फिर से ड्रा करो, अभी जाकर ये चीज तुमको आसान लगेगा। देखो ओ पी क्यू टी, this is your theta, this angle is theta, your r vector, a vector, b vector, ये कितना था, one is cos theta, is your b sin theta plus qt. Now from the figure, what is tan beta? Tan beta in triangle, in right angle triangle OPQ, tan beta is equal to perpendicular by base P by QT by OT, QT by OT. We can write QT by OT का वैल्यू क्या है OP plus PT, so which implies tan beta is equal to QT is your B sin theta, B sin theta by OP is A plus PT B cos theta. So now we can say tan beta is equal, sorry, only beta. Now we can find beta is equal to tan inverse B sin theta by A plus B cos theta. This is the angle made by, what is beta? Angle made by r vector with respect to whom? A vector in anti-clockwise sense. In anti-clockwise sense. इतना आसान हुआ देखिए। तो बीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आपसे इन ट्रूथ सपोज tan इनवर्स b वेक्टर मॉड sin थीटा डिवाइडेड बाय a वेक्टर मॉड प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा। In this way actually we can write. I think it's fully clear to all of you. कहीं पे कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दो। So this is about the magnitude and direction of resultant vector in case of triangular vector addition. In that case, we can add two vectors simultaneously if they are in same order. Yes, then the third side of the triangle taken in opposite order, that gives their resultant vector as per the triangular vector addition rule. This is your first method of vector addition. Clear हो गया? So now we will proceed towards parallelogram law of vector addition. In that case, what you will observe? देखो जिसको ट्रायंगल लॉ समझ में आया, पैरेललोग्राम लॉ पक्का समझ में आ जाएगा। लेकिन पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ से? Here we can add, in case of parallelogram law of vector addition, we can add two vectors simultaneously if they are in opposite order. If they are in opposite order, ये कब opposite order होगा? When two vectors add such a point simultaneously, then they will be in opposite order. तो मेरा कहने का मतलब क्या है, देखो ये तो हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का सारा कंटेंट। देखो उसका स्टेटमेंट से लेकर एनालिटिकल एक्सप्रेशन हो गया सही तरीके से। वेरी गुड। नेक्स्ट कम टू अवर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट मेथड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा? सपोज लेट अस थिंक दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, लेट अस थिंक दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, and a object के ऊपर अभी two forces are acting simultaneously. Two forces are acting simultaneously in this object. So let this one is
one vector, A vector and B vector. These two vectors are acting at a point simultaneously. These two vectors are acting at a point simultaneously. Point कौन सा point है? देखो ये वाला point. कौन सा connection पे है? Tail to tail connection पे है. So how we can add these two vectors when they are in opposite order? When they are in opposite order. That's our problem. Now see, now you consider one thing. This is B vector, this one is A vector. दिखाई दे रहा है सबको? Very good. ये दोनों को बेस करके एक पैरेललोग्राम लो, सॉरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करो. ओके, ये दोनों को बेस करके पैरेललोग्राम जज करो. ये दोनों को बेस करके मैं एक पैरेललोग्राम इमेजिन कर रहा हूं. दिखाई दिया? यस. Now you see these two vectors, A vector and B vector, they are representing two adjacent sides of this parallelogram, and this is their common tail point. In this case, the diagonal starting from their common tail point gives their resultant vector. This one is R vector. आसान हो गया सबको? So what the meaning of parallelogram law of vector addition पता चल गया? If two vectors are acting at a point simultaneously, represented by two adjacent sides of a parallelogram taken in opposite order, then the diagonal starting from their common tail point gives the resultant vector both in magnitude and direction. So as for the figure, R vector is equal to A vector plus B vector. This one is the resultant vector. These two are component vectors, and theta is the angle between this A vector and B vector. Now they are connected tail to tail. So this angle theta is the angle between A vector and B vector. Here also our aim is to find the magnitude of resultant vector and also the direction of resultant vector. How can we do? So we have to think about the analytical portion. So before proceeding to that part, now write the statement of parallelogram law of vector addition. तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? देखो, स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इफ टू वेक्टर्स acting at a point simultaneously are represented by ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन are represented by two adjacent sides of a parallelogram. Two adjacent sides of a parallelogram taken in opposite order, then diagonal, the diagonal starting from their common tail point represents their resultant vector by both in magnitude, represents their resultant vector bracket in magnitude and direction. So I think this language portion is very clear to all of you. So this is about the statement of parallelogram law of vector addition.
and the meaning of this parallelogram law vector. Theta क्या है? Angle between two vector. And in this case, to find the direction of resultant vector, let us think this r vector makes an angle beta with respect to a vector in anti-clockwise sense. I think ये समझ में आया? Okay. So find the magnitude and the direction of resultant vector. Next, give heading magnitude and direction of resultant vector. Magnitude and direction of resultant vector. Let's give this heading. Magnitude and direction of resultant vector. इसको कैलकुलेट करने के लिए we have to think about this diagrammatic part. Let us think. This is your B vector and this one is A vector. तो दिखाई दे रहा है ठीक से? Very good. And ये दोनों को कंसिडर करके क्या करना चाहिए हमको? We have to draw a parallelogram considering them as two adjacent sides of parallelogram. पैरेललोग्राम ठीक से दिखाई दे रहा है? पैरेललोग्राम नहीं, ये थोड़ा सा हुआ. परफेक्ट. देखो पैरेललोग्राम हो गया. Then the diagonal starting from their common tail point gives their resultant vector. So as per our figure, is your A vector, one is B vector. This is marked as O. This is P. This is Q. Let it is M, and this is R vector. Theta is the angle between A vector and B vector. Same thing, same process. Just like our triangle of vector addition, what you have to do? Extend the OP vector till S. Extend OP vector till S. Till S we have to extend. And draw QT. Draw QT perpendicular upon P vector. Draw QT perpendicular upon OP vector. That means in case of parallelogram, opposite sides क्या होगा? इक्वल होगा. तो ये जो B वेक्टर दिखाई दे रहा है, ये B वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करके लाकर यहाँ पे अटैच कर पाऊंगा या नहीं? बोलो. दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? अभी ये हो जाएगा हमारा B वेक्टर. एंड इसको भी पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे अटैच कर दो, तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. वेरी गुड. दिखाई दे रहा है सबको? एंड ये तुम्हारा परपेंडिकुलर QT. Clear? So same language, same thing we have to write. An angle made by R vector with respect to A vector in anti-clockwise sense कितना लिए थे हम लोग? बीटा लिए थे. Clear? तो ये फिगर से देखो, ये फिगर पे व्हाट इज OP? OP का मैग्नीट्यूड A. व्हाट इज PQ? PQ का मैग्नीट्यूड B. व्हाट इज OQ? उसका मैग्नीट्यूड R. वेरी गुड. इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल PTQ. TQ राइट एंगल ट्रायंगल पे साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय QT बाय हाइपोटेन्यूस PQ. QT डिवाइडेड बाय PQ तो हमारा B, PQ हमारा B. तो QT का आंसर कितना मिला? B साइन थीटा. सिमिलरली cos थीटा कितना होगा? PT बाय PQ. तो PT बाय P. व्हाट इज PT? PT इज इक्वल टू P cos theta. मिल गया? वेरी गुड. So now you proceed in right angle triangle. In right angle triangle, OTQ. OQ square is equal to OT square plus QT square. OT square plus QT square. And what is OQ square? That is R square. What is OT? OT is equal to OP plus PT. OP plus PT का होल स्क्वायर.
प्लस QT स्क्वायर। तो R स्क्वायर कितना मिला हमको? OP इज A, PT इज B cos थीटा होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज QT B sin थीटा, इसका भी होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो R स्क्वायर कितना मिला? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। A प्लस बी होल स्क्वायर में ओपन कर दो। देन नेक्स्ट टर्म क्या था? B sin थीटा का होल स्क्वायर, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्या मिलेगा हमको? R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, ये दोनों में से B स्क्वायर को कॉमन लेने से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना मिलेगा? 2AB cos थीटा। तो ये तो 1 हो गया। तो R स्क्वायर का वैल्यू क्या हुआ? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो R का वैल्यू कितना मिलेगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos एंगल बिटवीन टू वेक्टर स्क्वायर रूट। वेरी गुड। तो इसको सिंपली वी कैन राइट इन ए वेरी सिस्टमेटिक मैनर। R वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर मॉड सेकेंड वेक्टर मॉड cos of angle between two vector, cos of angle between two vectors, cos of angle between two vectors square root। देखो सिस्टमेटिक वे में हमको रिप्रेजेंट करना चाहिए। इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी फॉर अस। हो गया? वेरी गुड। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होने के बाद व्हाट वी हैव टू राइट? tan theta, sorry tan beta, direction of r vector. So in this case I am going to write direction of r vector. What you have to do? So tan beta find करो in triangle, in right angle triangle OTQ, बड़ा सा ट्रायंगल ले जाओ OTQ। tan beta कितना होगा? QT by OT, QT by OT। तो QT by OP plus PT, OP plus PT। तो tan बीटा कितना हुआ? ये हो गया तुम्हारा B sin थीटा डिवाइड बाय A प्लस B। बीटा का आंसर कितना होगा? tan इनवर्स B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए? tan इनवर्स सेकेंड वेक्टर मैग्नीट्यूड मॉड sin थीटा डिवाइड बाय फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड मॉड प्लस सेकेंड वेक्टर मैग्नीट्यूड मॉड cos ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। This is about our angle between, sorry, angle made by what is beta? Beta क्या है? रिप्रेजेंट करो। Beta is the angle made by r vector with respect to a vector in anti-clockwise sense. Clear? So in one diagram we can explain everything. I think this portion is very clear to all of you. This is about the magnitude and direction of resultant vector in case of parallelogram vector addition. तो दोनों केस में देखो फॉर्मूला सेम टू सेम आ रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वो सेम ऑर्डर पे अप्लाई होगा। इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट ऑर्डर, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग। दोनों में क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बराबर ही आ रहा है। सेम फॉर्मूला। सो इजी टू लर्न, इजी टू एक्सेप्ट, इजी टू ग्रास्प एवरीथिंग। इट इज इजी, इट इज वेरी इजी। नेक्स्ट, इसका स्पेशल केसेस हम लोग स्टडी करेंगे। इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, सपोज थीटा बिटवीन देम सपोज 0 डिग्री होगा, तो डायग्राम कैसा दिखाई देगा? देखो, तो यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ स्पेशल केसेस। तो वी विल डिस्कस थ्री स्पेशल केसेस, थ्री स्पेशल केसेस। नाउ सी, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री,
अच्छा थीटा 0 डिग्री होने से तुम्हारा डायग्राम कैसा होगा, ये तो है तुम्हारा बी वेक्टर सपोज, ये तो तुम्हारा बी वेक्टर एंड ये क्या है, ये तुम्हारा सपोज ए वेक्टर, ये क्या है तुम्हारा ए वेक्टर। परफेक्ट। तो दे आर इन सेम डायरेक्शन, एंगल बिटवीन क्या है दोनों के बीच में 0 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल 0 डिग्री होने से तुम्हारा रिजल्टेंट क्या होगा, देखो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, r इज इक्वल टू दिस इज b वेक्टर एंड दिस वन इज योर a वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सेकंड वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर 2 इनटू फर्स्ट वेक्टर मॉड सेकंड वेक्टर मॉड cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, cos 0 तो 1 हो गया, सो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होल रूट ऑफ, and this gives us a plus b whole square square root. That means r is equal to a plus b, and remember this is the maximum value of resultant vector when two vectors are in same direction and acting at a point simultaneously, then resultant vector on that object क्या होगा, resultant vector का magnitude upon that object a plus b दोनों का magnitude का बराबर। क्लियर। नेक्स्ट स्पेशल केस क्या है, देखो नेक्स्ट स्पेशल केस इज अवर व्हेन, अच्छा यहाँ पे बीटा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे होगा, देखो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर भी ड्रॉ करो, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। परफेक्ट। इज अवर आर वेक्टर। वेरी गुड। ये ए वेक्टर को इधर ले जाओ, चलेगा। वेरी गुड। ये तुम्हारा ए वेक्टर एंड ये तुम्हारा बी वेक्टर हो गया। परफेक्ट। देखो कितना आसान हो गया है। तो दिस विल बी योर, अच्छा क्लोन हो गया। अभी हुआ ठीक से डायग्राम। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 180 डिग्री मीन्स सपोज दिस इज योर ए वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ग्रेटर है एक्चुअली, एंड दिस इज सपोज योर बी वेक्टर, दिस इज सपोज योर बी वेक्टर। बात को समझो, दिस इज योर बी वेक्टर, दिस वन इज ए वेक्टर, एंड एंगल थीटा बिटवीन देम कितना 180 डिग्री, एंड थीटा 180 होने से तुम्हारा, थीटा 180 डिग्री होने से तुम्हारा रिजल्टेंट का आंसर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री, cos 180 कितना -1, तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रूट ओवर, दैट मीन्स a माइनस b होल स्क्वायर इज ए डिफरेंस b होगा। अच्छा इसको भी हम लोग b माइनस ए भी लिख सकते हैं, b माइनस ए का भी होल स्क्वायर। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर ये होगा a माइनस बी होगा और b माइनस ए भी होगा। इन जनरल वी कैन राइट a डिफरेंस b मैग्नीट्यूड, एंड रिमेंबर दिस इज योर r मिनिमम। तो ग्रेटर माइनस लेसर कर दोगे हो जाएगा तुम्हारा क्या, रिजल्टेंट वेक्टर। तो एज पर आवर डायग्राम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बड़ा दिखाई दे रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। अच्छा यहाँ पे देखो बीटा क्या है, बीटा क्या था, एंगल मेड बाय आर वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, तो यहाँ पे बीटा क्या है, देखो आर वेक्टर एंड ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन पे, सो बीटा इन दिस केस 0 डिग्री। वेरी गुड। हियर इन दिस केस बीटा कितना होगा, आर वेक्टर देखो ये ग्रेटर डायरेक्शन पे आ रहा है बस, बीटा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, तो ए वेक्टर ग्रेटर है, तो इसीलिए आर वेक्टर उसी डायरेक्शन पे आ रहा है, तो इसीलिए दोनों पैरेलल दिखाई दे रहा है। सो बीटा क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो व्हेन, ये कब पॉसिबल होगा, व्हेन ए वेक्टर मॉड इज ग्रेटर देन बी वेक्टर, बट इफ when b vector magnitude is greater than a vector magnitude, तो रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन पे होगा along b वेक्टर ग्रेटर मैग्नीट्यूड के साथ, लेकिन a वेक्टर इसी डायरेक्शन पे, so this is a vector b vector, sorry this is your resultant vector, this one is a vector, angle between them 180 डिग्री, तो बीटा क्या होगा इन दिस केस 180 डिग्री।
आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये थोड़ा सोचना चाहिए तुमको. ओके, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट क्या है. If two vectors are perpendicular to each other, if two vectors are mutually perpendicular to, in that case what you can say about their resultant. If this is your A vector suppose, and this is suppose is your B vector. Very good. This is A vector, this is B vector. TT connection दिखाई दे रहा है. Theta between them is 90. Case 3, when theta is equal to 90 degree. तो R कितना होगा? R is equal to A square plus B square plus 2AB cos 90 रूट ओवर cos 90 कितना 0. सो ये हो जाएगा हमारा R is equal to A square plus square. And this is one of the very important point. If two vectors are mutually perpendicular to each other, that case resultant is equal to A square plus B square root over. Very good. And in this case तुम्हारा resultant वेक्टर कैसा ड्रा करोगे? ये दोनों को बेस करके एक पैरेललोग्राम ड्रा करना चाहिए हमको. ये दोनों को बेस करके you consider a parallelogram and diagonal starting from their common tail point. Diagonal starting from their common tail point gives their resultant vector. Diagonal starting from their common tail point gives their resultant vector. So this is your R vector. An angle made by R vector with respect to a vector in anticlockwise sense. We cannot say that this is beta. And here in this figure, what is tan beta? Tan beta is equal to, ये B means ये भी क्या होगा? B. ये भी क्या होगा? A. समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ. Tan beta equal to B by what is beta? Beta equal to tan inverse B by A. Second vector mod by first vector mod. Tan inverse. हो गया. If when two vectors are mutually perpendicular to each other, this is the answer. So this is about our parallelogram law of vector addition. तो थोड़ा वेट करो. इन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4 पे ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम रिलेटेड मैक्सिमम न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट पार्ट रे मु सॉल्व करिबी. ओके, बट यू हैव टू कंप्लीट दिस थ्योरी, राइट ऑल दिस थिंग्स इन योर डाटा. तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अभी मैं पूछूंगा. नोट पॉइंट पे लिखो. नोट पॉइंट, रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर. हमको क्या मिला? Range means this is R, it is less than or equal to R max and it is greater than or equal to R mean. So R is less than or equal to A plus B and greater than or equal to R minimum कितना मिला था? A difference B का magnitude. I think this formula is clear to all of you. यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन पक्का फेस करें. ये जो बॉक्स के अंदर में जो लिखा हूं ना, बॉक्स के अंदर जो भी मैं तुमको शो कर रहा हूँ, इसी रिलेटेड एक क्वेश्चन वी विल फेस डेफिनेटली, पक्का. ओके, so this is about our triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition and why vectors are not added in algebraic operation. Rather we have to focus upon vector algebra, the meaning. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे. वाइंड अप करने के बाद ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व होगा. उसके बाद जो भी चीज अवेलेबल है वी विल डिस्कस सीक्वेंशियली. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. सो प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस चैनल, प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.